students, in today's video we will be doing mental math subtraction, in which we have already discussed that we are not going to use any pencil or any calculator to do this kind of subtraction. We are just gonna do it in our mind. But we can use one other thing, that is we can use our hand for the counting as well. So let's solve the questions that are given over here together so that we can practice how to do the subtraction using the mental math. Alright, सबसे पहले we are going to see that there is 67 and 10. That is 67 minus 10. So 10 is a very easy number. हम इसको simply क्या करेंगे कि we are going to subtract 1 from 1, that is 7 minus 0 is 7, right? और 6 को 1 में से minus कर देंगे, so it's gonna be 6 minus 1 is 5, right? Okay, before we start with the next question, let's do one thing. हम अपने fingers को numbering कर देते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Alright, now we'll use the fingers for the counting. Okay, so look at the second example in which they have said 24 minus 8. So we can see कि 24 minus 8 में इधर जो ones की value है, it has a smaller ones and this is the bigger one. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें simply borrow करते हैं and then we do the subtraction. But why do we have to go through all that if the number is only singular over here? सिर्फ एक number है ना यहाँ पर, तो हम इसके लिए क्या trick use करेंगे? We are gonna do the backward counting. So we are going to start from 24 and we are going to count 8 steps backward. ठीक है, तो हम 24 से counting start करेंगे और backward 8 steps जाएंगे. तो इधर क्या होगा, ये हो जाएगा 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 and 16. So what do we get the answer? That is, हमने 8 steps back move किया 24 से, so answer is going to be 16. Alright, that is how we can use our hands to do the backward counting and do the mental math. Now look at the second example in which it's 23 minus 12. इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, हम इधर नंबर को बड़ा करके लिखते हैं 23 minus 12, राइट? तो वंस की वैल्यू जो है उनको पहले फाइंड कर लेंगे. what is 3 minus 2? 3 minus 2 is 1. And what is 2 minus 1? 2 minus 1 is 1. So the answer over here is 11. So you can see that I have used one or two methods to do the subtraction mentally. Okay, now look at this example, 78 minus 25. Still we are gonna do the same work over here. इसमें हम क्या करेंगे कि we are going to subtract the ones unit separately and the tens unit separately. ये मैं आपको सिर्फ यहाँ बड़ा करके लिख के देंगे ताकि you can understand how to do it. 8 को 5 में से subtract करेंगे mentally. Now look over here, we have 8 over here. ठीक है, इसमें से 5 minus करने हैं. 1, 2, 3, 4, 5. So how many are left? कितने numbers left हैं? 3. So we're gonna write over here 3. इसी तरह 7 में से 2 minus करेंगे. This is 7 over here. इसमें से 2 minus करने हैं. 1, 2. How many are left? How many are left? 5 is left. So we're gonna write over here 5. Alright, let's erase this thing so that we have to do the next example as well, and we're going to count this on our hand. Alright, so the next example is 44 minus 32. 44 minus 32 में हम क्या करेंगे, 4 में से 2 minus करेंगे. What is 4 minus 2? That is 2. And what is 4 minus 3? It's 12. So that was the easy one. We are gonna move to the next question, and that is 87 minus 27. इसमें हम क्या करेंगे, ones को 1 में से minus करेंगे. 7 minus 7 is 0. And what about 8 minus 2? So we are gonna count over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. And what is 8 minus 2? 1, 2. And what is the answer? 6. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 6. So 87 minus 27 is 60. We're going to move to the 3 digit वैल्यू और इसमें भी हम सिमिलर वही काम करेंगे. वंस को वंस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. वंस को 0 माइनस 0 इज 0. इसी तरह टेंस को टेंस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, राइट. बजाय इसके कि मैं इधर से कैरी करूँ एंड देन आई डू द रेस्ट ऑफ द वर्क, मैं क्या करती हूँ, मैं 35 में से 27 माइनस करती हूँ. और वो कैसे करूँगी? लेट्स डू द काउंटिंग फ्रॉम 27 और 27 से आगे जितना 35 तक नंबर्स आते हैं हम उसे काउंट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. 27 28 29 30 31 32 33 34 and 35. So that means कितने numbers का difference है इसमें? 8 numbers का difference है. We're gonna write over here 8. So 350 minus 270 is 80. इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जिसमें 0 एंड 0 गिवन है. तो वंस एंड वंस में 0 अगर हम माइनस करते हैं तो आंसर सेम 0 आ जाता है. और अगर हम 82 है और यहाँ पे 58 है, इन दोनों को माइनस करते हैं तो इसमें गैप ज़्यादा है. तो वी आर नॉट गोना काउंट इट टिल 85 टू फाइंड हाउ मच गैप इज देयर. तो हम सिंपली इसको क्या कर देते हैं, हम माइंड में इसको 7 कर लेते हैं और इसको 12 कर लेते हैं. ठीक है, सो वी आर गोना से कि 12 को माइनस करेंगे कितने में से? 8 में से. तो 12 को माइनस करें 8 में से तो क्या आंसर आता है? आंसर इज 4. इसी तरह 7 minus 5 is 2. Alright, so this is how you are going to do the mental math subtraction using your fingers and using some other tricks that we have learned in this video. See you guys in the next video.